बेटा वी अगेन कम टू द चैप्टर फोटोसिंथेसिस, है ना। हमने प्रोसेसेस मैक्सिमम डिस्कस कर ली है फोटोसिंथेसिस की। वी हैव डन लाइट रिएक्शन, वी हैव डन डार्क रिएक्शन बाय C3 साइकिल और बाय C4 साइकिल, वो भी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, हमने डिफरेंसेस भी डिस्कस किए कि C3 एंड C4 प्लांट्स में क्या डिफरेंसेस है। अब आ जाते हैं स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्लांट्स है, दैट इज कैम प्लांट्स। कैम प्लांट्स की फुल फॉर्म है, कैम की फुल फॉर्म क्या है? Crassulacean acid metabolism. So the plants which shows Crassulacean acid metabolism are called as cam plants. These are also called as succulents. ठीक है, ये क्या है? These are xerophytes or desert plants which store water in some plant part. Which store water in some plant part. ठीक है, maybe in roots, maybe in stem, maybe in leaves. For example, जो कैक्टस है या ओपनशिया है, stores water in stem. उसकी स्टेम थिक है, कभी आई डोंट प्रेफर कि उसको काटो, बट कभी थोड़ा सा काट के देखना तो उसमें से पानी आपको निकलता नजर आएगा। उसके बाद अगर हम कहें एलोवेरा, it stores water in leaves. ठीक है, उसके आपने देखे कितने मोटे मोटे लीव्स होते हैं, तो उसके लीव्स में वाटर स्टोर होता है। तो ये प्लांट्स है जिनको हम कहते हैं सकुलेंट्स। इनकी क्या अडेप्टेशंस है? अडेप्टेशंस हम क्या कहेंगे? जीरोफिटिक अडेप्टेशंस इनकी क्या है? तो इनकी अगर हम बात करें तो दे हैव फोटोएक्टिव स्टोमेटा। बेटा फोटो का एंटागोनिस्टिक ऑपोजिट है स्कोटो। तो जो स्टोमेटा दिन में खुलते हैं, they are called as photoactive stomata, and the stomata which opens during dark, during night time, they are scotoactive stomata. तो ब्रैकेट में लिख लो, stomata opens in dark or light. ठीक है, another is these are C4 plants but lack cranzonot. ठीक है, तो होता क्या है? नाइट में, ड्यूरिंग डार्क या ड्यूरिंग नाइट, stomata open, CO2 diffuses inside, and CO2 is accepted by PEP with the help of peptase during night. नाइट में पेप्टेज एक्टिव है, रुबिस्को एक्टिव नहीं है। ठीक है,
इसलिए नाइट में CO2 कौन ले रहा है? PEP, ठीक है, एंड results in formation of pyruvate and pyruvate change into malate या malic acid, जिसको हम C4 एसिड भी कहते हैं। एक मिनट, ये थोड़ा सा देखिए, इट चेंजेस इनटू ऑक्सैलोएसिड, ठीक है, एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम आगे कुछ नहीं होता है, लॉट ऑफ मैलिक एसिड गेट्स एक्यूमुलेटेड। देन during day, malic acid undergo decarboxylation, results in formation of pyruvate, and pyruvate regenerates to form phosphoenol pyruvate, and CO2 is taken by RUBP to form glucose, C3 साइकिल। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि कैम प्लांट्स में क्या है, C4 साइकिल occurs during C4 cycle occurs during night time and C3 cycle occurs during daytime. Is it okay? तो हम क्या कहेंगे कि although, पहले ध्यान से समझो, although Crane's anatomy is absent, still C4 and C3 cycles separate with respect to time of their occurrence. Within mesophyll cells only. दोनों साइकिल्स कहां पे हो रही है? मीजोफिल सेल्स में, क्योंकि बंडल शीट सेल्स में तो क्लोरोप्लास्ट ही नहीं है, क्रेन्स एनाटॉमी है ही नहीं, तो इसलिए, बट दोनों साइकिल्स कैसे सेपरेटेड है? विद रिस्पेक्ट टू द टाइम ऑफ अकरेंस। ड्यूरिंग नाइट टाइम व्हेन द स्टोमेटा ओपन, primary fixation occurs by C4 cycle. During daytime, when stomata close, the C4 acids liberate carbon dioxide, which is then fixed by C3 cycle. ठीक है, लिख लो फिर फटाफट से जल्दी से। Initial fixation of carbon dioxide occurs at night by C4 cycle, whereas final fixation of CO2 by C3 cycle occurs during daytime. और एक स्टार डाल के, they have photoactive stomata, to conserve water, as during night time, there is low temperature
no light, and thus less transpiration. And thus less transpiration. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा factors affecting transpiration. Factors affecting photosynthesis, not transpiration. Factors affecting photosynthesis. There are internal factors and external environmental factors. Internal factors are number and orientation of leaves, another is orientation of chloroplasts, types of mesophil, और यहाँ पे लिख लेना पेलिसेड mesophil, इसमें मोर क्लोरोप्लास्ट है एंड मोर फोटोसिंथेसिस. ठीक है जी. Another is age of the plant, and genetic factors. Age of the plant and other genetic factors. These are the internal factors and hormones also, which affect rate of photosynthesis. उसके बाद external environmental factors. इसमें आ जाते हैं light intensity, it's the light intensity which affects the rate of photosynthesis, not the duration of light. Another is temperature, या पहले सेकंड पे हम लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सीक्वेंस में लिखे. सबसे पहले लाइट, another is CO2 concentration, third is temperature, and fourth is water. ये जो तीन है, these follow Blackman's law of water नहीं, law of limiting factors. क्या मतलब है मैं अभी बताऊंगी. Light intensity, CO2 concentration and temperature, they follow Blackman's law of limiting factors. बेटा अब ना एक कार की फैक्ट्री है,
है ना, कोई सी भी आपको जो पसंद है कार उसकी सोच लो। उसका एक यूनिट जो है वो कार की बाहर की बॉडी बना रहा है, उसी फैक्ट्री का एक यूनिट जो है वो टायर्स बना रहा है, उसी फैक्ट्री का एक यूनिट हेडलाइट्स बना रहा है, एक सीट्स बना रहा है, एक स्टीयरिंग बना रहा है। सभी यूनिट्स काम करेंगे तब जाके एक कार तैयार होगी। बट लेट्स से जो बाकी की चीजें तो बहुत बहुत बन रही है, बट जो स्टीयरिंग वाला है ना वो बहुत क्रूशियल। लेट्स से फॉर एग्जांपल स्टीयरिंग जो है वो दिन में कितने बन पा रहे हैं, आज के दिन जो है वो कितने बने, सिर्फ 10 स्टीयरिंग बने। टायर्स हंड्रेड्स में बन गए, बाकी बॉडी भी बहुत सारी बन गई, बाकी सब चीजें बन गई, बट जो स्टीयरिंग है वो सिर्फ 10 बने। तो अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे कितनी कारें बनी बेटा, जल्दी से। स्टीयरिंग जितने स्टीयरिंग बने, सब 100 200 बन गए। हाँ जी अब बताओ। हाँ गुंजन, हम जितने स्टीयरिंग बनेंगे। जितने स्टीयरिंग बनेंगे। तो इसका मतलब रेट ऑफ कार फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन, शिवांशी ठीक है बेटा, डिपेंड्स ऑन द मिनिमम फैक्टर। ठीक है ना, कि जिसकी स्पीड सबसे कम है फाइनल प्रोडक्ट का रेट तो उस पर डिपेंडेंट है। So formation of या making of steering is a limiting factor. As the number of steering formation gets increased, number of car making gets increased. Is it right or not? ठीक है, अब क्या है कि मैनेजमेंट का ध्यान है स्टीयरिंग बनाओ स्टीयरिंग बनाओ स्टीयरिंग बनाओ। स्टीयरिंग वालों ने भी दिन रात स्टीयरिंग बनाई, उन्होंने ढेर सारे स्टीयरिंग बना दिए, है ना। कार की प्रोडक्शन इंक्रीज होती गई, पहले 10 कारें बनती थी, फिर 20 50 100 बननी शुरू हो गई। बट फिर क्या होगा कि एक दिन देखा कि भाई मैक्सिमम जो है वो 200 कारें ही बन रही है। स्टीयरिंग वाले कहते स्टीयरिंग हमारे पास पड़े हैं, सब कुछ है, बट क्या है, जो सीट्स है वो नहीं बन पाई। ठीक है, सीट्स मैक्सिमम एक दिन में 200 ही बनी थी, इसलिए स्टीयरिंग बहुत थे, सब कुछ बहुत था। तो अब लिमिटिंग फैक्टर कौन सा हो गया, अब सीट्स लिमिटिंग फैक्टर होगी, कि अब कारें उतनी बनेगी जितनी सीट्स बन रही है। ठीक है, तो व्हाट इज लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, इट मींस द रेट ऑफ ए प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द स्लोएस्ट फैक्टर, दैट इज लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, लिखो जरा, पहले ये लिख लो और फिर मैं आपको समझाती हूँ कि क्या है। तो अकॉर्डिंग टू Blackman's law of limiting factors, Blackman's law of limiting factors, comma, when a process is controlled by, when a process is controlled by many factors, then the rate of the process depends on the slowest factor, depends on the slowest factor, whose increase increases the whose increase directly increases the rate of the process. This slowest factor is called as limiting factor. This slowest factor is called as limiting factor. Next point देखिए, the same factor does not remain limiting all the time. ऐसा नहीं कि हमेशा लाइट ही लिमिटिंग है या हमेशा CO2 ही लिमिटिंग है, ऐसा नहीं। The same factor does not remain limiting all the time.
but the type of limiting factor changes from time to time. But the type of limiting factor changes from time to time. ठीक है बच्चों? For example, the plant kept under optimum light, and sufficient CO2 does not photosynthesize या may not photosynthesize, does की जगह लिख लो may not photosynthesize because the temperature is very low. Full stop. Photosynthesis will start if the temperature is increased. If the temperature is increased. So here, rate of photosynthesis directly depends on increase or decrease of temperature, and thus temperature is a limiting factor. एक्सक्यूज मी मैम हाँ जी बेटा, मैम आपने 10 टेम्परेचर के बाद क्या बोला था? thus temperature is a limiting factor. ये हमने एग्जाम्पल बताई थी आपको. ठीक है, अब हम बात करते हैं फैक्टर्स पे और धीरे धीरे आपको सारा बताते हैं. तो सबसे पहले आ जाता है फर्स्ट फैक्टर है लाइट. Has 3 parameters. Light quality, रेड लाइट है, ग्रीन लाइट है, व्हाइट लाइट है, क्या है? Then light duration and third है light intensity. Light duration has no effect on photosynthesis. Duration of light has, लिख लो साथ साथ, duration of light has no effect on photosynthesis. मैम ये पॉइंट रिपीट करना प्लीज. 3 है. Light, it has 3 parameters: quality of light, duration of light, and intensity of light. Duration of light has no effect on rate of photosynthesis. Light quality में आ जाइए. Maximum photosynthesis occurs in red and blue wavelength of light. Minimum या no photosynthesis in green wavelength of light. जो लाइट इंटेंसिटी है, it directly
affects the rate of photosynthesis. ठीक है, but based on availability of light. किसी प्लांट्स को बहुत ज्यादा अवेलेबल है, जो प्लांट्स किसी दूसरे प्लांट के नीचे ग्रो करते हैं, शेड में ग्रो करते हैं, उनके पास कम लाइट है. तो बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट, प्लांट्स आर हेलियोफाइट्स एंड शायोफाइट्स. हेलियोस मतलब सन. These grow in lighted regions, open lighted regions. आप open lighted regions कह सकते हैं, पूरी सन में ग्रो करते हैं. शायोफाइट्स, शेड लविंग प्लांट. These are shade loving. जो हेलियोफाइट्स है बेटा, हेलियोफाइट्स जो सन में ग्रो कर रहे हैं, ओपन एरिया में ग्रो कर रहे हैं, ये समझने वाला पॉइंट है, समझो. They reach their light saturation point in 10% of light. Yes, sunlight. What is saturation point? That light intensity at which the rate of photosynthesis is maximum. ध्यान से मेरी बात सुनो. It is called as saturation point. इसके बाद आप लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज करते रहोगे, कोई प्लांट को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ 10% सनलाइट में उसकी सैचुरेशन आ जाती है. तो जो हेलियोफाइट्स है, इनमें तो इसका मतलब कभी लाइट की कमी है ही नहीं है. इनको तो बहुत थोड़ी सनलाइट चाहिए, इसलिए लाइट इज नेवर ए लिमिटिंग फैक्टर. जबकि क्योंकि लाइट अबंडेंट है, वो लिमिटिंग कैसे हो सकती है इन प्लांट्स के लिए. जबकि जो शेड प्लांट्स है, उसमें क्या है कि वो अगर उस प्लांट के नीचे ग्रो कर रहे हैं जिसकी टहनियां थोड़ी दूर दूर है, तो लाइट छन के उनके पास पहुंच जाती है, तो वो ढंग से ग्रो कर लेते हैं. बट कुछ प्लांट बहुत घने हो जाते हैं, ठीक है, अगर उनके नीचे ग्रो कर रहे हैं तो उनको बहुत कम लाइट मिलेगी. तो दे हैव, तो उन प्लांट्स के लिए लाइट इज इन लिमिटिंग फैक्टर. तो जब उनको किसी कारण से ज्यादा लाइट मिल जाएगी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज. ठीक है, तो ये लिखो पहले यहाँ पर. So write down saturation point. यहाँ पे 10% ऑफ फुल सनलाइट लिख लेना. 10% ऑफ फुल सनलाइट. ठीक है, तो यहाँ पे लिखो लाइट सैचुरेशन पॉइंट है, क्या है? लाइट saturation point. It is the light intensity. It is the light intensity at which the plant shows maximum photosynthesis. Plant shows maximum photosynthesis. Full stop. If the light intensity is increased, if the light intensity is increased beyond saturation point, beyond
saturation point, comma, there is no further increase in photosynthesis. There is no further increase in photosynthesis. But at very high light intensity, rate of photosynthesis decreases. Rate of photosynthesis decreases due to destruction of photosynthetic pigment. Due to destruction of chlorophyll. Due to destruction of chlorophyll and closure of stomata. ये देखिए जरा हम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम एक बार वो पॉइंट रिपीट कर दो। If the light intensity is increased beyond light saturation point, ये देखो पहले इधर देखो, there is no effect on the rate of photosynthesis. But at very high light intensity, the rate of photosynthesis gets decreased. Rate of photosynthesis gets decreased due to destruction of chlorophyll, and closure of stomata. ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, दिस इज लाइट saturation point. ठीक है, ये बना लो पहले। क्योंकि जो हेलियोफाइट्स है वो थोड़ी सी सनलाइट में सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, इसलिए लाइट उनके लिए कभी भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं है।
but light is a limiting factor for shadophyte shade loving plants which grow in the thick forest, क्योंकि उनको हमेशा लाइट की डेफिशिएंसी रहती है, इसलिए उनके लिए हमेशा लाइट जो है एक लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है जी, रब कर दूं मैं इसको, हो गया बेटा? यस मैम। यस मैम। सेकेंड फैक्टर आ जाता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। It is the major limiting factor. It is the major limiting factor. यहाँ पे ध्यान रखना है, ध्यान से देखो, नो इफेक्ट, ध्यान से समझो, पहले कॉपी नीचे रख दो, पेन नीचे रख दो। नो इफेक्ट ऑफ CO2 concentration on photosynthesis when plant is kept at low light intensity. Why? Because ये रेड पेन से लिखना, क्यों नहीं? Because here, because in this condition light intensity is a limiting factor. दो फैक्टर एक साथ लिमिटिंग नहीं हो सकते, यहाँ पे लाइट लिमिटिंग फैक्टर है। अगर लो लाइट इंटेंसिटी पे हम CO2 बढ़ा दें तो देयर इज नो चेंज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर CO2 becomes a limiting factor। कब? CO2 becomes a limiting factor under हाई, बहुत हाई नहीं बट हाई लाइट इंटेंसिटी। जब प्लांट्स को सफिशिएंट लाइट मिल रही है तब CO2 जो है एक लिमिटिंग फैक्टर बन जाए। एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन कितनी है? 0.03 to 0.04%। ठीक है जी। डिक्रीज in CO2 concentration decreases rate of photosynthesis mainly in C3 plants। होती तो C4 में भी है but mainly in C3 plants as they show, आपने पूरा लिखना है, फोटो रेस्पिरेशन एट लो CO2 कंसेंट्रेशन। PR मींस फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, और फिर जैसे जैसे हम CO2 डिक्रीज करते जाएंगे तो क्या होगा?
रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और कम और कम और कम होती जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, फोटोसिंथेसिस इज लाइक कमाई ऑफ द इनकम ऑफ द प्लांट एंड रेस्पिरेशन इज एक्सपेंडिचर ऑफ द प्लांट। क्या चीज ज्यादा होनी चाहिए, इनकम की एक्सपेंडिचर? बोलो। इनकम। इनकम। फोटोसिंथेसिस। अगर एक्सपेंडिचर हम कहते हैं कि इनकम 2 रुपए की, एक्सपेंडिचर 5 रुपए का, तो कैसे करोगे, भूखे मर जाओगे। इनकम 10 की और एक्सपेंडिचर 1 का, तो हम कुछ जमा भी करते रहे। तो फोटोसिंथेसिस प्लांट की इनकम है, रेस्पिरेशन प्लांट का एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार डाल के रेड पेन से लिखो, rate of photosynthesis is 10 times higher than the rate of respiration. In general, अगर हम कहें, rate of photosynthesis is 10 times higher than the rate of respiration. But if the CO2 concentration is decreased, rate of photosynthesis decreases. Whereas rate of respiration remains the same. रेस्पिरेशन 1 है, फोटोसिंथेसिस 10 है, फोटो रेस्पिरेशन 1 ही रहेगी, फोटोसिंथेसिस 9, 8, 7, 6 इस तरह कम होता रहेगा। एंड देयर कम्स ए, एंड फाइनली देयर कम्स ए CO2 कंसंट्रेशन, एक ऐसी CO2 की कंसंट्रेशन आ जाएगी, देयर कम्स ए CO2 कंसंट्रेशन एट विच rate of photosynthesis becomes equal to rate of respiration, and this is called as CO2 compensation point. जितना कमाया उतना प्लांट खा रहा है। At compensation point, the plant just survives. At compensation point, comma, the plant just survives. Full stop. No storage of food occurs. No storage of food occurs. Thus, if the CO2 concentration is decreased below compensation point, the plant will fill in the blank। आपने करना, क्या करेगा प्लांट? कृषा, हाँ जी कृषा, अगर CO2 कंसंट्रेशन कंपनसेशन पॉइंट से भी नीचे चली जाए तो क्या होगा प्लांट को? द प्लांट विल नॉट सर्वाइव, क्योंकि खर्चा ज्यादा हो गया, बन इतना रहा नहीं, तो उसको स्टारवेशन हो जाएगी, भूख से मर जाएगा। ठीक है, द प्लांट विल डाई ड्यू टू स्टारवेशन। द प्लांट, अगर CO2 कंसंट्रेशन हम कंपनसेशन पॉइंट से भी कम देखें तो हम सोचेंगे कि प्लांट अब मरने वाला है। द प्लांट विल डाई ड्यू टू स्टारवेशन, ड्यू टू स्टारवेशन। ठीक है, अब आ
आ जाता है बेटा, CO2 compensation point is different. CO2 compensation point is different for C3 and C4 plants. C3 and C4 plants. Because C4 plants have more affinity for CO2, and they can fix CO2 even at very low CO2 concentration. Even at very low CO2 concentration. क्योंकि C4 प्लांट्स में जो पेप्को है, पेप्केस एंजाइम है, वो तो सिर्फ CO2 फिक्स करता है, ठीक है, जबकि रुबिस्को कभी भी धोखा दे देता है। जैसे CO2 कंसंट्रेशन खत्म हुई या कम हुई तो रुबिस्को फंक्शन एज ऑक्सीजनेस, जबकि जो पेप्केस है वो सिर्फ और सिर्फ CO2 फिक्स करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो CO2 compensation point for C3 plants is 25 to 100 ppm. ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, और यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं 0.03% का मतलब है 300 ppm. So C3 plants has CO2 compensation point at 25 to 100 ppm, जबकि this is for C3 plants. In C4 plants, CO2 compensation point is 0 to 10 ppm. बहुत low CO2 concentration, 0 to 10 ppm. The optimum CO2 concentration, optimum means जिसपे maximum photosynthesis हो सकती है. The optimum CO2 concentration is that concentration at which the plant performs maximum photosynthesis. C4 plants require less CO2 concentration. C4 plants require less CO2 concentration for attaining maximum photosynthesis. तो C4 के लिए ऑप्टिमम CO2 concentration या फिर CO2 saturation point एक ही बात है, is equal to 360 ppm, और हम क्या कहते हैं 360 माइक्रोलीटर, 360 माइक्रोलीटर. है ना, माइक्रोलीटर ये हम L इनवर्स भी कर देते हैं एज कंपेयर टू टोटल, whereas C3 plants require
high CO2 saturation point. High CO2 saturation point, and that is about 450 ppm. 450 ppm or 450 microL L inverse. इसका मतलब है 450 माइक्रोलीटर ऑफ CO2 पर 100 या पर लीटर ऑफ एयर. 450 माइक्रोलीटर, इसका मतलब ये है 450 माइक्रोलीटर ऑफ CO2 पर लीटर ऑफ एयर. ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए. बिकॉज इन C3 प्लांट्स, increase in CO2 concentration at the high level, increases the rate of photosynthesis, thus the high productivity of C3 plants can be obtained in greenhouses. Which maintains high CO2 conditions. ग्रीन हाउसेस में हाई CO2 कंडीशंस होती है, इसलिए C3 प्लांट्स की हम प्रोडक्टिविटी वहां पर बढ़ा सकते हैं. Therefore, productivity of C3 plants या high productivity of C3 plants can be obtained in greenhouses which maintain high carbon dioxide atmosphere या conditions. For example, bell pepper, and bell pepper मतलब शिमला मिर्च, bell pepper and tomatoes. For example, the bell peppers and tomatoes are mainly grown in greenhouses to get their better yield. तो अब अगर हम ये फिर है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और यहाँ पे है एक्स एक्सिस पे आ जाता है CO2 कंसंट्रेशन. तो 0 से शुरू करें. 0, 100, 200, 300, 400, 600. अगर हम C3 प्लांट्स की बात करें तो C3 प्लांट्स में
थोड़ा सा आप इतना स्लीप तो नहीं है। CO2 बढ़ रही है, फोटोसिंथेसिस बढ़ रही है। यहाँ पे आकर मैक्सिमम हो गई एंड देन इट बिकम्स कांस्टेंट। दिस इज C3 प्लांट। जबकि C4 प्लांट्स they show higher productivity than C3 plants, ये आपको पता है। तो इसलिए हम यही पे, but they attain saturation point earlier than the C3 plants. This is C3 plant and this is C4 plant. ठीक है, C3 प्लांट्स का सैचुरेशन पॉइंट ये है 450 एंड C4 का सैचुरेशन पॉइंट 360 के करीब है। ठीक है ना? Why C4 plants are drawn above C3 plants? Because C4 plants have higher productivity than C3 plants. और हम एक और चीज ठीक करना कि जो C3 प्लांट्स है वो बहुत लो CO2 से नहीं, वो इधर से शुरू करती है। ये भी ठीक है। C4 प्लांट्स थोड़ी सी भी CO2 हो तो CO2 फिक्सेशन शुरू कर देते हैं, जबकि C3 प्लांट्स बहुत लो कंसेंट्रेशन पे वो शुरू नहीं करते। तो ये ग्राफ क्या इंफर करता है? फर्स्ट पॉइंट, C4 plants can fix CO2 at very low CO2 concentration as compared to C3 plants. दूसरा है C4 plants have higher productivity than C3 plants. और तीसरा है C4 plants have low CO2 saturation point than C3 plants. C4 plants have low CO2 saturation point than C3 plants. ठीक है जी? So this is about CO2. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा टेम्परेचर। out of light and dark reaction, out of light and dark reaction,
कौन सा बेटा एंजाइम से कंट्रोल्ड है, लाइट की डार्क? जल्दी से बोलो हरगुन, which is controlled by enzymes? हरगुन, हरगुन बता रही है, is it light reaction which is controlled by enzymes? बताओ, yes or no? सरगम, नो मैम, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन बेटा, लाइट तो लाइट से है, वहां पे तो एनर्जी बहुत है, डार्क रिएक्शन एंजाइम से है। So out of light and dark reaction, comma, the dark reaction is controlled by enzymes whose activity is regulated by temperature, regulated by temperature. Although light reactions, ये second point लिखिए, although light reactions are also temperature sensitive, है तो वो भी, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पे क्लोरोफिल खत्म हो जाती है, are also temperature sensitive, but to a lesser extent than dark reaction, but to a lesser extent than dark reaction. और आपको नेक्स्ट पॉइंट, आउट ऑफ C3 एंड C4 का, इसका मतलब है टेम्परेचर मेनली एंजाइम्स की एक्टिविटी को डिपेंड अफेक्ट करता है। नेक्स्ट एक और पॉइंट कर लीजिए, द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम्स गेट्स डबल्ड। एक्टिविटी ऑफ, ये हमने एंजाइम्स में भी किया था, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स गेट्स डबल्ड when the temperature is increased by 10 degree from minimum up to optimum. When the temperature is increased by 10 degree from minimum up to optimum. पर अब क्या है कि the optimum temperature differs in different plants. The optimum temperature is different in different plants. For example, tropical plants have high temperature optimum. वो ज्यादा टॉलरेट करते हैं, ट्रॉपिक्स में तो गर्मी बहुत पड़ती है। Tropical plants have a higher temperature optimum than the temperate plants, क्योंकि temperate plants तो ठंडे ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट है, further C4 plants are more thermostable than C3 plants. Therefore, C4 plants have high temperature optimum as compared to C3 plants. C4 plants have high temperature optimum. अगर C4 plants में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस 40 या उससे मतलब 50 डिग्री पे हो रही है, तो C3 प्लांट्स में 30 डिग्री 25 डिग्री पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रही है। C4 प्लांट्स, मैम ये पॉइंट रिपीट करना प्लीज। कर रही हूँ कि C4 plants have high temperature optimum as compared to C3 plants. ठीक है जी,
तो एग्जाम्पल लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल C4 plants optimum temperature is 30 to 45 degrees centigrade. 30 to 45 degree centigrade. और दूसरी लाइन में लिखो ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर C3 plants. Optimum temperature for C3 plants is 10 to 25 degrees centigrade. ठीक है जी. नेक्स्ट आ जाता है वाटर. नेक्स्ट पैरामीटर है वाटर. आपको पता है पानी बहुत जरूरी चाहिए. विदाउट वाटर तो लाइट रिएक्शन होगा ही. तो वाटर तो बहुत इंपॉर्टेंट. बट जितना भी पानी एब्जॉर्ब करता है सिर्फ 1% पानी जो है वो फोटोसिंथेसिस में यूज होता है. तो इसीलिए वाटर जो है ना एज सच डायरेक्टली वाटर अगर अवेलेबल है थोड़ा बहुत भी तो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर लेगा, है ना. तो वाटर का डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है फोटोसिंथेसिस पे क्योंकि थोड़ा सा पानी चाहिए. बट अगर प्लांट में है ना सॉइल में पानी कम है, ट्रांसपीरेशन ज्यादा हो रही है, तो वाटर डेफिशिएंसी है तो क्या हो जाएगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे. और अगर स्टोमेटा क्लोज हो गए तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से अंदर आएगी, तो फोटोसिंथेसिस कम होती है. दूसरा उसके पत्ते मुरझा जाएंगे, विल्टिंग हो जाएगी. पत्ते मुरझा जाएंगे तो सरफेस एरिया ऑफ लीव्स वो कम हो जाएगा, एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाएंगे और इसलिए फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगी. ठीक है. तो यहाँ पे लिखो वाटर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट कह लीजिए. वाटर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट इन द लाइट रिएक्शन. But effect of water affects photosynthesis indirectly. But deficiency of water लिख लो. But deficiency of water affects photosynthesis indirectly. For example, deficiency of water closes the stomata and thus reduces CO2 availability. And thus reduces CO2 availability. Second कर लीजिए. During deficiency of water, the plant wilts, WILTS. Arrow डालो. Surface area gets reduced. Surface area gets reduced and decrease in the rate of metabolism. Decrease in the rate of metabolism. और फिर एरो डालो. रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस. सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो लाइट कम होगी. लाइट कम होगी तो लाइट रिएक्शन ATP NADH2 कम बनेंगे, फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज इफेक्ट ऑफ वाटर. और लास्ट फैक्टर आ जाता है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन Oxygen is the byproduct of photosynthesis. Oxygen is the byproduct of photosynthesis.
increase in oxygen in environment, increase in oxygen in environment decreases activity of rubisco, decreases carboxylase activity of rubisco, carboxylase activity of rubisco, and thus decreases rate of photosynthesis. तो इसलिए अगर O2 इंक्रीज करता है तो फोटोसिंथेसिस तो डिक्रीज ही करेगा. Thus decrease rate of This rate of photosynthesis. तो हम क्या कहेंगे? Therefore, oxygen has harmful effect. Therefore, oxygen has harmful effect on the rate of photosynthesis, and this is called as Warburg effect. This is called as Warburg, B-U-R-G. This is called as Warburg effect. ठीक है जी बेटा. So this is all about photosynthesis. ठीक है जी. तो आज हमने photosynthesis खत्म करनी थी. So we have finished. Okay students.